Hi friends, so let's know क्या है अंदर. So let's open it up and see. And let me know. Simulation supercar superhero alloy. यहाँ पे Avengers realistic design, collect them all. थोड़ा अजीब सा लग रहा है मतलब font के हिसाब से. यहाँ पे लिखा specific. It's not a toy. This is collector alloy coil. यार मतलब I don't think they could put like really maybe इस पे may vary for limitations. I think copyright का Infinity War, but Infinity War का font नहीं है, so maybe copyright का issue है. So this is not like a very original license, is like a copy, but who cares? Kid does not care. Like this mostly they are like कि मेरा कार है तो ठीक है ना, अभी कोई पैकेट देखने थोड़ी आएगा. मतलब कलेक्टर्स वगैरह का रहता है कि हाँ पैकेट हो वो हो, बट बच्चों के लिए तो यार वो है, इधर वो दिख रहा है उतना ही काफ़ी रहता है ना. अपने को तो अपने को क्या देखना है. वाओ, एंड इट कम्स विद दिस 4 अमेजिंग कार्स. मैं आपको बट इसका थोड़ा पैकेज टूट गया है, बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. थोड़ा थोड़ा हॉट व्हील्स की याद दिला रहा है. तो ऑल 4, दिस इज़ आई थिंक द फर्स्ट वन. ऐसे स्टार्ट करते हैं एंड लेट मी जस्ट जूम इट इन. सो दिस इज़ आई थिंक पता नहीं किसका दिस इज़ किसका है. आई फॉरगॉट द सिंबल, सो बैड, आई एम सॉरी. दिस लुक्स गुड. इज दैट अ पुल बैक? इट इज लाइक अ हॉट व्हील्स वाला थिंग. टायर का थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह. दिस इज हैवी बट नॉट हॉट व्हील्स वाला हैवी. नीचे का प्लेट इज दिस इज प्लास्टिक. यूजुअली हॉट व्हील्स में थोड़ा थोड़ा मेटल रहता है. एंड let me take out my caliper to show you कितना height है. So height is about 76 millimeter. This is width wise, this is like 31 and the height is like 18. uh, so this is the first. Looks nice, looks sturdy and पीछे ही ऐसे दे रखा है, but it will handle like जितना मेरे को लग रहा है it will handle like थोड़ा सा है मतलब it is not heavy in a sense. कहीं से खुलता है नहीं. this does not open for sure. गेट्स वगैरह नहीं खुलते हैं, बट दिस लाइक अ हॉट व्हील्स कार. दिस इज़ द फर्स्ट. लेट्स गो फॉर द सेकेंड. दिस इज़ तो पक्का आयरन मैन है. लुक्स नाइस, दिस लुक्स नाइस. दिस लुक्स लाइक वेरी हॉट व्हीली मतलब सम रीजन. बट हॉट व्हील्स में आपको नीचे यहाँ पे मैंने हॉट व्हील्स का पहले किया. आई विल गिव यू द लिंक अप जहाँ पे आई विल शो यू कि हॉट व्हील्स का आपको डिफरेंस अगर देखना हो तो उसका कैसा है. दिस टायर्स आर नाइस. दिस आयरन मैन का दिस लाइक अ लिटिल लैम्बोर्गिनी टाइप्स वैसा वाला, but looks nice, cool, like looks Iron Man-y. And this is also again plastic. And let me take out my caliper to show 73 and this width is like 31 and then height, the highest would be some 19. So this is how it looks nice. This is so let's go for the third car. This is Captain America, but Captain America this is फिसल रहा है मतलब. and almost looks same. They still have a plastic. नीचे कोई branding नहीं है, so this probably a copy. Please let me know what do you think. Avengers का like Captain America का वो, but कई कई जगह पे ना लाइक अलाइनमेंट ख़राब है तो इसलिए मेरे को थोड़ा अजीब सा खटक रहा है. बट एवरीबडी हैज़ द सेम व्हील्स. लाइक जब आप देखोगे ना तो सबका व्हील बेस विल लुक सेम ओनली. So that's one big problem. And the height and width मैंने ही माप रहा because it's usually the same. Now this is the fourth car which is nicer. Spider-Man, this is like a plastic base और यहाँ पे वो रखा है. I think ये उड़ भी सकता है but this looks nice. But again plastic chassis are very bad because ये लगेगा तो टूटेगा इतना गंदा ना. plus this just ऐसे ही लगा दिया. see like they rotate off independent of each other. I don't know but ये अलग अलग हो रहा है and I don't like it. So this is Spider-Man. This is a little bit bigger car. I'm not going to measure it for sure, but this does not looks very great quality, but yeah, still nonetheless the car. This is how it looks. चारों को अगर हाथ में रखे तो कुछ ऐसे दिखते हैं and पीछे से ऐसे. And link in the description for this. Not that great, but yeah, on a budget you can. Bye bye. Thank you.